हाय एवरीवन। सो आज हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं वो है हाउ टू राइट द किट। सबसे पहले जब आपका बच्चा 3 and 3.5 ईयर्स का हो जाता है तो उसे राइटिंग की प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी हो जाती है। तो राइटिंग की प्रैक्टिस से पहले मैंने आपसे कुछ एक्सरसाइजेज शेयर की हैं, हैंड मोटर स्किल्स शेयर की हैं और इसके अलावा बहुत सी ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज शेयर की हैं। तो राइटिंग से पहले आपने बच्चे को ये सारी एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस करवानी है, पेंसिल ग्रिपिंग टेक्निक्स सिखानी है। उसके बाद फिर आपको जो है वो बच्चे को सिखाना है कि किस तरह से उसने राइट करना है अल्फ़ाबेट्स। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत होगी एक 4 लाइन्स नोटबुक की, एक पेंसिल की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रोक्स के साथ। अच्छा, नोटबुक्स में यहाँ पे डेट का ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो मेक श्योर टू राइट डेट हेयर एंड द टॉपिक हेयर। फॉर एग्जाम्पल आज हम पढ़ेंगे स्ट्रोक्स एंड टुडे इज़ 16 June. Make sure to tell your child to make your notebook clean and neat so that this habit will continue with them. Okay, now strokes क्या होते हैं? Strokes सबसे पहले अपने बच्चे को सिखाना है straight line. What is a straight line? It starts from here and end here. You have to do like this, make a dot and start from here and end it here. Okay, and name it like a straight line. फर्स्ट स्ट्रोक जो हम बच्चे को स्टडी करवाएंगे वो है स्ट्रेट लाइन। इस पर आप बार बार प्रैक्टिस करवाएं बच्चे को, उसे कहें कि इसे ट्रेस करे एंड देन यू हैव टू मेक इट ट्रेस हेयर अगेन। Then ask your child to trace these lines again and again with a pencil and then make dots from the next line like this and tell them where to start and where to end. Where to start and where to end so that the line doesn't go like this or this in the cross. You have to make points like this and make sure that your child is doing properly. This is how you have to make your kid notebook. This is the lesson number 1 and let your child practice this for at least 3 days. When he will be expert enough to draw a straight line, then start the next stroke, which is horizontal line. We can also call it sleeping line. Again, you have to mention its name, sleeping or horizontal line. You have to mention date again and again to make your child use to. Okay, make sure you have mentioned topic. इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आप शुरू में बच्चे को सिखाएंगे उसे वही आदत पड़ेगी कि वो हमेशा इसी तरह से अपनी नोटबुक को मेंटेन करें। सो अगेन let your child trace it again and again and then make small dashes like this and let them trace these also. Then tell your child where to start and where to end. Where to start and where to end. Where to start and where to end so that the line goes properly. You have to make worksheet like this for your child so that he or she can practice it regularly. Make sure the notebook should be neat and clean and let your child use 2 of it.